That's coming to us straight from the Jewar Airport or the Noida International Airport. This is the first test flight that we see that has landed in the Jewar Airport. Remember, this is a validation flight that was supposed to be landing today in Jewar at the Noida International Airport. This is, of course, in the run-up to the start of commercial operations from April next year. So that's the first flight, an IndiGo flight that has just landed at the Noida International Airport in Jewar. वो अपनी नजरों में कैद करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पर मंत्री, विधायक और जो तमाम अधिकारी और अफसर मौजूद हैं, बल्कि आपको बता दें कि ये तमाम कामगार लोग, जो करीब 2000 के करीब कामगार लोग हैं, पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने एयरपोर्ट को तैयार किया। और ये देखिए, ये जो साइन होता है, ये स्वागत किया जाता है और इस समय प्लेन का स्वागत किया जा रहा है। सक्सेसफुल ट्रायल के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से वाटर कैनन की बरसात की जा रही है, फायर ब्रिगेड की मदद से बरसात की जा रही है। यह ऐतिहासिक क्षण सभी लोग अपनी आंखों में कैद कर ले और ये जो क्षण है, इसी का इंतजार था। ये प्लेन का स्वागत किया गया है और आप देखेंगे कितनी नजदीक से, और अब ये प्लेन संभवतः यहां से टेक ऑफ के लिए तैयार होगा। लेकिन तमाम तैयारी की गई है और तमाम तैयारी पूरी हो और सक्सेसफुल हो, और ये सक्सेसफुल हो गया जिसका इंतजार था आपको, हमको, तमाम सरकार को और जो आसपास के लोग, यानी ना सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, ये तमाम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है और एक बड़ी राहत आने वाले वक्त में होगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक दिल्ली में एकाएक बढ़ा, उसके बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बसाया जा रहा है और उसी के दौरान इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग कराई गई है। और इस सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब यहां से इसकी रिपोर्ट जो है वो डीजीसीए को सौंपी जाएगी और डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपने के बाद आपको बता दें कि यहां पर एयरड्रोम लाइसेंस होता है, उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो तमाम एजेंसीज हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे ताकि जो फ्लाइट है उसको सक्सेसफुल जो है उसको उड़ान भरी जा सके। अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन रखी गई है और इसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए तमाम प्रशासन, मिनिस्टर्स, सरकारें, सभी लोग जुटे हैं और आज इस सक्सेसफुल ट्रायल करा लिया गया। अब संभवतः यहां से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी क्योंकि लैंड हो चुकी, लैंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सक्सेसफुल लैंड हुआ है। दिल्ली से विमान आया था, तो एक बड़ी राहत है, नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है और इस क्षण के साक्षी वो तमाम कामगार भी हैं जो यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी, we also have our colleague Anvit Srivastava who's joining us on the broadcast. Anvit, after the first test flight, successful landing of the first test flight at the Noida International Airport, now all set for these reports, the data collection reports to be sent to the DGCA. How soon can we expect the commercial operations to begin here? See, it will take some time because the first flight has landed. This was done to test the facilities that have been set up there. Also, the air traffic control from Delhi and the Airport Authority of India, they are keeping a keen eye on all the developments, and the calibration of equipment will be done as per the data that is collected from the landing that has been done today successfully. Also, the ATC that has been set up in the Jewar, that the equipments will be set up. They have all been in place, but for some time, what the process is that equipments are put on testing, and therefore this will continue for some more time. A few more testing facilities could be set up, and some more testing of flights could also be witnessed in the time to come. After that, all the data is sent to DGCA. DGCA would take a detailed look at it, and once it is all put through clearance, only then it will be declared as a fit for operation, the airport as well as the air traffic control. After that, the airport will become operational, and soon we can see that it is highly indicative of the fact that the Jewar Airport is almost ready, and as the AI plans to make it fully operational by the mid of this year, that can be seen happening now. Right, and a greenfield airport, Anvit, what does it mean for people who are staying not just in Delhi, Noida, but also from other places closer to Delhi? They will be really greatly helped because of the flight operations that will be beginning here in some time from now. Certainly, see, Western UP would be the most beneficial part of the state, and Delhi as well, and the adjoining areas. But see, because the existing Delhi International Airport, that is the Indira Gandhi International Airport,
that lies quite south of Delhi and caters to mostly to Gurgaon and Haryana side, other than Delhi. Also, it has been a long debate that people traveling from other parts of Delhi to the Indira Gandhi International Airport, mostly we और हम लोग सब तमाम लोग साक्षी हैं और जिस तरीके से ट्रायल की बात कही जा रही थी वो क्षण आ गया, ट्रायल हो गया, सक्सेसफुल ट्रायल हो गया और तमाम अधिकारी लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जब भी गौतम बुद्ध नगर आए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर अभी क्या स्टेटस है और लगातार अधिकारियों को प्रोत्साहित करते रहे। जो ज्यूरिक कंपनी उनके अधिकारियों से भी संपर्क में रहे और लगातार यही निर्देश देते रहे कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके और अब उसको पूरा किया गया और पूरा करने के बाद आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम प्रक्रियाएं होती लैंड होने के बाद की उसको भी पूरी की जा रही। इंडिगो का ये प्लेन यहां पर लैंड कर चुका है और आपसे बताया जा रहा है कुछ देर बाद ये टेक ऑफ भी करेगा। लेकिन ये बता दें आपको कि ये तमाम लोग साक्षी। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक आपको तस्वीर भी और दिखाएं। मेरे ठीक पीछे ये टर्मिनल है, मैं टर्मिनल की तस्वीर दिखाता हूं आपको। उसके बाद ये तमाम जो कामगार मजदूर लोग हैं जो लंबे वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं कई वर्षों से, ये तमाम लोग साक्षी है। ना सिर्फ यहाँ के अधिकारी बल्कि ये तमाम लोग भी खुश थे और जब प्लेन लैंड किया था तमाम लोगों ने, जो कामगार मजदूर लोग हैं, इन्होंने तालियों से उसका स्वागत किया। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभी लोग उत्सुक हैं और इनकी मेहनत, क्योंकि ये लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने ही इस इमारत को तैयार किया है और अब ये टर्मिनल भी तैयार हो रहा है। जल्दी टर्मिनल भी तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग इसके साक्षी बने। जाहिर तौर पे एक बड़ा माइलस्टोन है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था और साथ ही प्लेन लैंड कर चुका है। प्लेन लैंड करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पे अब There you see the first validation flight has landed at the Noida International Airport in Jewar. This will, remember, be beneficial for people who live in Delhi NCR, but also adjoining places like Agra for that matter, or for that matter other places closer to Delhi who had this problem, in Western UP specifically, who had a problem going to the Delhi International Airport, which lay at the absolute south of Delhi. Now remember, the NIA had earlier scheduled to start the operations of this particular airport, the Noida International Airport, by the end of this year, but the timeline seem to have extended because of certain constraints in getting the delivery material, the construction material on ground. The equipment was delayed due to global supply chain constraint and disruptions over there. But finally, all of that has been dealt with, and we can see the first flight, the validation flight, the test flight having landed. It's an IndiGo flight that is finally landed at the Jewar Airport, and this of course is going to pave the way for the commercial operations that will be beginning at the Noida International Airport in the coming future. We are looking at an April 2025 deadline for that to happen. My colleague Anvit Srivastav is also with us on the broadcast. Anvit, I was earlier talking about how the NIA had already given a clearance on whether or not the operations can begin by the end of this year, but that's not meant to be. At least the test flight has been successful. Yes, certainly. See, the test flight also is quite highly indicative of the fact that the airport is ready for operations. However, for past some time, the air traffic control had been testing the equipment there, and following that, once the testing was complete, it was decided that the test flight should be done, and the completion of this flight is, clearly hints that the airport is ready. The equipment that have been placed there, the ATC that has been set up, it is all ready, and it was actually an ambitious project because, see, Narendra Modi, the Prime Minister, had laid the foundation, and Yogi is now the CM of UP. He had been taking stock of the situation time to time, and we spoke to some of the officials in the Airport Authority of India, and they also said that for the past some time, the calibration of the equipment was being done. They were put on test, and the flight test was done only to see that the equipment that have been set up and the ATC setup that has been made. साथ ही आपको बता दें कि